ये वीडियो लेक्चर में हम विंटर 2023 पेपर में से इनफाइनाइट सीरीज के सम सॉल्व करेंगे। विंटर 2023 के पेपर में इनफाइनाइट सीरीज में से ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम ये वीडियो लेक्चर में ये 4 सम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2b, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज summation n is 1 to infinity 1 upon n plus 1 whole raised to n। अब ये सीरीज में हम पहले टर्म ऑब्जर्व करेंगे, तो टर्म में यहाँ पे क्या दिया है हमें, होल रेज टू पावर n। ओके, तो जब भी हमारे पास पावर n दिया है, क्लियर, तो हम क्या यूज करेंगे, रूट टेस्ट। तो पहले हम समझेंगे कि रूट टेस्ट क्या है। तो रूट टेस्ट में क्या है, 1 सीरीज un इज गिवन। ओके, नाउ फॉर दिस सीरीज फर्स्ट फाइंड nth नंबर ऑफ टर्म un। फिर हमें क्या करना है, फाइंड लिमिट l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी nth रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ un। नाउ सॉल्व दिस लिमिट। ओके, अब ये लिमिट का जो आंसर आएगा वो हमें चेक करना है। इफ l इज लेस देन 1 देन व्हाट वी कंक्लूड, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। इफ l इज ग्रेटर देन 1 देन द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। एंड इफ l equal to 1 then this test is inconclusive। इनकंक्लूसिव मतलब कि हम l equal to 1 के लिए कुछ भी कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। ओके, सो नाउ लेट्स फर्स्ट अप्लाई रूट टेस्ट। ओके, नाउ दिस वन इज अ गिवन सीरीज, दिस वन इज व्हाट, गिवन सीरीज un। नाउ in this series what is the nth number of term, what is the un is 1 upon n plus 1 raised to n। Okay, now apply root test। So write l is equal to nth root of mod of un। Okay, now put the value of un। and take the absolute value। Okay, now here n is what, positive value, because in this series n is vary from 1 to infinity। Okay, तो मतलब कि ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रिमूव कर सकते हैं। ओके, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, नाउ रिमूव द एब्सोल्यूट वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1 होल रेज टू n। And now write this nth root. So this one is 1 upon n. Okay. Now n is cancel out. Now if apply limit n tends to infinity. So put here infinity. So 1 upon infinity plus 1 is infinity. So we get answer 0. Okay. So here what is L? Here we get L equal to 0. So now from this, the condition of root test. If L is less than 1, then what we conclude, the given series is convergent series। Okay, and here what we get, here we get L equal to 0 and this one is less than 1, means what we conclude, the given series is convergent series। Okay, Question 5b, test the convergence of the series summation n is 1 to infinity and e raised to minus n square। Now again in this sum
power of n is given. Okay, so whenever power of n is given, first apply root test. अब ये सम आप रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हो. ओके, लेकिन जब भी पावर है तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टेक द रूट टेस्ट. अगर हमारे पास कॉम्पिटिशन कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अप्लाई द रेशियो टेस्ट. गॉट इट. चलो फर्स्ट हम रूट टेस्ट स्टार्ट करेंगे. सो एज वी डिस्कस अर्लियर, व्हाट इज द रूट टेस्ट? इन रूट टेस्ट फाइंड वन लिमिट. ओके, L is equal to limit n tends to infinity nth root of mod of un. Now here what is un? Un is nth number of term of the series. If this L is less than 1, then what we conclude? The given series is convergent series. If L is greater than 1, then the given series is divergent series. If L equal to 1, then the test is inconclusive. मतलब कि for L equal to 1 हम ये सीरीज में ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. मतलब कि दिस टेस्ट इज फेल फॉर L equal to 1. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रूट टेस्ट. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द गिवन सीरीज UN. ओके, so now what is the UN here? UN is equal to n e raised to minus n square. Okay, now apply root test. So L is equal to limit n tends to infinity nth root of mod of UN. Okay, so first write the definition of L. Now put the value of UN. Limit n tends to infinity nth root of n e raised to minus n square. Okay, now put this value. Now simplify this. So n raised to 1 by n. Here e raised to minus n square is given. Okay, so that's why write in denominator e raised to n square, and again this power raised to 1 by n. Here nth root is given. Okay, so now this nth root is applied to n also on this e raised to minus n square. Okay, but in separately. Again ये दोनों क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रिमूव कर सकते हैं. ओके, नाउ पुट द वैल्यू हियर. यूज वन रिजल्ट. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n रेज टू 1 बाय n इज इक्वल टू 1. अब ये रिजल्ट आप एल हॉपिटल रूल से फाइंड कर सकते हो. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है और ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है. सो नाउ दिस वैल्यू इज बिकम 1. ओके, इन डिनोमिनेटर हियर n स्क्वायर इज गिवन, सो 1n इज कैंसल आउट. वी हैव e रेज टू n. ओके, इन डिनोमिनेटर वी हैव e रेज टू n. सो नाउ e रेज टू इंफिनिटी after putting limit. So e raised to infinity is what? This one is very large number. Say yes or no. So e raised to infinity is nothing but infinity. Okay, so 1 upon infinity is what? 0. Here we get L equal to 0. Okay, now check the root test. So in root test, if L is less than 1, then what we conclude? The given series is convergent series. Okay, अब यहाँ पे क्या है, L equal to 0 and 0 is less than 1. Okay, so what we conclude? The given series is convergent series. Okay, मतलब कि यहाँ पे जो सीरीज हमें दी है ये सीरीज क्या है? This series is convergent